हाय एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। सो आज के सेशन में हम बात करेंगे द फाउंडेशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को समझेंगे, फंडामेंटल समझेंगे, क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, हाउ टू सॉल्व इट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वेशंस अपने को पता है कि वी हैव लीनियर इक्वेशंस के बारे में वी हैव एन आइडिया, है ना। सो इक्वेशंस अपने पास बेसिकली इक्वेशंस में दो चीजें होती हैं, अपने पास वेरिएबल्स होते हैं एंड कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट। सिंपल सा अगर अपन एक इक्वेशन की बात करें दैट ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, राइट। दिस इज हाउ अ इक्वेशन लुक्स लाइक। अब इक्वेशन में लाइक एक्स और वाई जो है वी कॉल देम एज वेरिएबल्स। ठीक है, एक्स एंड वाई दे आर कॉल्ड वेरिएबल्स। ठीक है, बिकॉज देयर वैल्यूज इज नॉट फिक्स। बट ए एंड बी इनको अपन क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड कोफिशिएंट्स। ठीक है, दे आर द कोफिशिएंट्स ऑफ द वेरिएबल एंड सी इज द कांस्टेंट, right? C is the constant term. So let's say if I have a equation like this ki 2x plus 3y is equal to 12. So in this equation I have x and y as variable, right? Why we are calling them variable? Because x and y they can take different values, right? But this is the coefficient of x, right? 3 is the coefficient of y and 12 is the constant term. Right. So in type of equations we know कि we have linear equations. Right. अब ये linear equations क्या होता है? Linear equations are the equations जहाँ पे आपका जो variable का power highest power होता है और we call it degree. Right. Linear equation में क्या रहता है कि जो आपका highest power रहेगा variable का, ठीक है, highest power of a variable in an equation is also called as degree of the equation. ठीक है, तो हाईएस्ट पावर और डिग्री जो रहता है दैट लीनियर इक्वेशन में इट विल बी वन। जैसे फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू 2x प्लस 5 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल 15, तो इस इक्वेशन में द हाईएस्ट पावर ऑफ द x और द वेरिएबल इज वन ओनली. So such type of equations are called the linear equations, or like this the highest power is 1 1. So these are the linear equations. Right, this is a linear equation in one variable because I have only one variable here. इसको बोलेंगे linear equation in two variables because I have two variables over here. So similarly linear equations, quadratic equations में क्या रहता है कि quadratic equation में the highest power or the degree will be 2, right? The highest power जो variable का रहेगा that will be 2. सेम वे में अपने पास क्यूबिक इक्वेशन रहता है, तो क्यूबिक इक्वेशन में डिग्री और द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 3 एंड सो ऑन, राइट। बट अपना फोकस रहेगा ओनली ऑन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट, राइट। तो व्हाट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे अपन ने बात किया दैट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल हैज द हाईएस्ट पावर और डिग्री उसका 2 होता है। अब जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इट लुक्स लाइक दिस: ax square plus bx plus c, right, where x is the variable and a and b and c they are constant terms. एक चीज अपने को ध्यान रखना है यहाँ पे, a should not be 0, right? a 0 हो जाएगा तो फिर ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं रहेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर अपन यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखते हैं, इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0. दिस इज हाउ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक्स लाइक, राइट। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल है, राइट। एक चीज अपने को और ध्यान रखना है कि just like a linear equation में for example linear equation I have in one variable like 3x plus 5 is equals to for example 17. Now इस situation में x will have only one value ना. If I calculate the value of x, I'll say 12, so you will say x is nothing but 4, right? I am getting one value. व्हाट हैपेंस कि जो डिग्री होता है, राइट, पीछे जो अपने डिग्री की बात किया था, तो डिग्री से हमें एक और चीज पता चलता है, डिग्री विल आल्सो गिव मी द नंबर ऑफ वैल्यूज दिस वेरिएबल विल टेक, है ना। कि अगर इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो x की क्या कितनी वैल्यू होगी, देयर विल बी ओनली वन वैल्यू, राइट, बिकॉज इसका डिग्री कितना है, 1 है। सो हाईएस्ट पावर और डिग्री 1 मींस देयर इज ओनली वन सॉल्यूशन फॉर इट, राइट।
बट डिग्री 2 है अपने पास, तो डिग्री 2 का मतलब हो जाएगा देयर विल बी 2 सॉल्यूशंस। डिग्री 3 का मतलब है कि देयर विल बी 3 वैल्यूज दैट सेटिस्फाई द कंडीशन। तो जस्ट एज इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन वी हैव अ डिग्री 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या रहता है, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल विद डिग्री 2। ठीक है, डिग्री कितना रहता है 2। नाउ डिग्री 2 मींस दैट देयर विल बी 2 वैल्यूज ऑफ x जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। राइट, सो आर एम विल बी टू सॉल्व। तो जब अपन बोलते हैं सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेसिकली हमें क्या करना है कि x की वो दो वैल्यूज निकालनी है, राइट, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। दोज वैल्यूज वी कॉल एज, ये जो वैल्यू होती है x की, उन वैल्यूज को अपन क्या बोलते हैं, रूट्स। ठीक है, दोज वैल्यूज ऑफ x आर नोन एज रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो जब भी अपन बात करेंगे रूट्स ऑफ द इक्वेशन भी इसको बोलते हैं, और वी ऑल्सो कॉल्ड इट एज जीरोस। ठीक है, जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट्स आप इसको कह लो, ठीक है, या जीरोस अगर हम इसको बोलते हैं, एक ही बात है। तो दीज आर द वैल्यूज ऑफ एक्स जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, राइट। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स आई विल गेट LHS इज इक्वल टू RHS। तो RHS जीरो है बेसिकली, राइट। तो एक्स की कौन सी वैल्यू रखने पे लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो जाएगा, दैट्स व्हाई अपन इसको जीरोस भी बोल देते हैं। ठीक है, and we also call them as roots of the equation. So our purpose, तो आज हम यही सीखेंगे कि जो roots of the equation है वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ऑल्सो थोड़ा सा हम इसका ग्राफ भी देखेंगे, राइट। ग्राफ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कि हाउ डज अ ग्राफ लुक्स लाइक। अब देखो, अगर अपने पास एक लीनियर इक्वेशन होता है, ठीक है, इफ आई हैव अ लीनियर इक्वेशन, फॉर एग्जांपल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax, ठीक है, प्लस by इज इक्वल टू c होता है सपोजिंगली। तो इसका जो ग्राफ होता है, व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ, आप एक्स वाई की अलग अलग वैल्यू पे ग्राफ प्लॉट करोगे, तो वी जनरली गेट द अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अपने को क्या मिलता है, उसका जो ग्राफ होता है, इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है ये, राइट। दिस इज हाउ अ ग्राफ ऑफ द स्ट्रेट लाइन लुक्स। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो हाउ डज द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक्स लाइक। सी, दिस इज हाउ द ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक्स लाइक। इसको अपन क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, जो इसका ग्राफ होता है कैसा दिखता है, पैराबोला। जस्ट लाइक लीनियर इक्वेशन का ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, सिमिलरली जब आप एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हो, तो यू विल गेट दिस टाइप ऑफ ग्राफ, राइट। ये दोनों एंड्स जो हैं दे विल रन टुवर्ड्स इंफिनिटी। ठीक है, दे कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, दे विल जस्ट गो स्ट्रेट। ठीक है, ये दोनों के दोनों कभी भी मिलेंगे नहीं। सेम गोज यार कि ये दोनों के दोनों दे विल स्ट्रेट, दे विल बी स्ट्रेट, ऐसे चलेंगे। तो इस ग्राफ को बोलते हैं पैराबोला। अब ये दोनों ग्राफ में व्हाट इज द डिफरेंस, उसको समझ लेते हैं। सी, वी नो कि जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, राइट। दिस इज हाउ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लुक्स लाइक। अब सी कि अपवर्ड पैराबोला कब बनेगा, राइट। जब आप अपवर्ड पैराबोला की बात करोगे, तो अपवर्ड पैराबोला के लिए वी ऑल हैव टू कीप इन माइंड a शुड बी ग्रेटर देन 0। मतलब a अपना क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, राइट। राइट, सो इफ a is greater than 0, तो you will find an upward parabola। ठीक है, दैट मीन्स कि उसकी जो फेस होगा वो ऊपर की तरफ खुलेगा, राइट। बट अगर इफ यू हैव अ ग्राफ, अगर अपने पास ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, एंड a इज नेगेटिव, राइट, a इज लेस देन 0, दैट इज a इज लेस देन 0, मतलब अपना x स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर नेगेटिव है, तो यू विल गेट अ डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, यू विल गेट अ डाउनवर्ड पैराबोला। ठीक है, एंड फॉर द पॉजिटिव, ए अगर अपना पॉजिटिव है, राइट, तो इन दैट सिचुएशन आपको क्या मिलेगा, एक अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इस ग्राफ को समझते हैं, तो व्हाट हैपनिंग कि व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स, ठीक है, तो हम x की लेट्स से कि अगर ये ऐसा है कि y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, तो लेट्स से कि जब आप x को 0 पुट करोगे, तो यू विल गेट अ करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y। फिर आप x को 1 पुट करोगे, 2 पुट करोगे, 3 पुट करोगे, तो करस्पॉन्डिंगली y की वैल्यूज आपको मिलती रहेंगी।
ठीक है, सिंस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यू विल बी गेटिंग टू वैल्यूज, राइट। तो दैट्स वाई आप क्या देखोगे कि ये जो ग्राफ है इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला बनेगा, राइट। ये जो लाइन है दीज, ये लाइन किसको डिनोट कर रहा है, राइट, दिस लाइन इज एक्चुअली डिनोटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है, एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट को ये डिनोट कर रहा है। तो अब यहाँ पे वेयर आर द रूट्स, अगर अपन बात करें कि रूट्स कहाँ पर होंगे, अगर मैं इस ग्राफ में रूट्स को देखना चाहता हूँ तो वेयर आर द रूट्स। तो सी रूट्स बेसिकली क्या है, व्हाट आर द रूट्स, रूट्स आर दोज वैल्यूज ऑफ एक्स, रूट्स क्या है, दोज वैल्यूज ऑफ एक्स जिसको आप यहाँ पुट करोगे तो जीरो आ जाएगा, जीरोस ऑफ द इक्वेशन। तो सी ये जो पॉइंट है जहां पर आपका ये एक्स एक्सिस को कट करेगा, these are your roots, right, these are your रूट्स। तो अगर अपने को रूट्स को लोकेट करना है ग्राफ पे, तो जहां पर भी ग्राफ आपका एक्स एक्सिस को कट करेगा, देयर आर द रूट्स। तो वी सेड कि यार डिग्रीज टू तो दो रूट्स होने चाहिए, तो यू विल फाइंड वन रूट इज देयर, वन रूट इज दिस, सेम केस, दिस इज वन ऑफ द रूट एंड दिस इज द अनदर रूट, राइट। नाउ अगर आप इस अपवर्ड पैराबोला को देखो और इस पैराबोला में इफ आई आस्क यू कि इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, तो सी आप इसका मैक्सिमम वैल्यू नहीं बता पाओगे बिकॉज ये आपका इनफाइनाइट जाएगा, ठीक है, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। तो मैक्सिमम वैल्यू तो आप इसका बता ही नहीं सकते, बट यू कैन ओनली फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू, ठीक है, आप इसका सिर्फ क्या बता सकते हो, मिनिमम वैल्यू बता सकते हो। तो फॉर अ अपवर्ड पैराबोला आई कैन नॉट फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू बट आई कैन फाइंड द मिनिमम वैल्यू, राइट। सेम केस कि ये जो ग्राफ है फॉर डाउनवर्ड पैराबोला, ये भी टुवर्ड्स इंफिनिटी रन करेगा, राइट, इंफिनिटी टू इंफिनिटी रन करेगा। नाउ द क्वेश्चन इज यहाँ पे आपसे ये है कि इसमें अब अपने को कैन नॉट फाइंड द मिनिमम वैल्यू बट आप मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो इसके लिए, राइट। वी कैन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू फॉर इट, ठीक है, we'll find the maximum value for this, right. This will run from plus infinity minus infinity to minus infinity, ठीक है। तो ये जो है आपका वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू, राइट, आप मैक्सिमम ही निकाल सकते हो, कैन नॉट फाइंड द मिनिमम। तो इफ वी हैव एज ग्रेटर देन जीरो तो आप उसमें सिर्फ मिनिमम वैल्यू निकाल पाओगे, राइट, बट इफ ए इज लेस देन जीरो तो वी कैन फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू फॉर इट, और ये क्या हो गए, रूट्स हो गए। तो आई होप अगर अब आपको ग्राफ दिखेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का तो यू वुड बी एबल टू डिकोड इट, right. Now let's come to the part where we will factorize, right. हम क्या करेंगे, रूट्स निकालेंगे कैसे, अभी जैसे हमने यहाँ पे समझा था that what are the roots, roots are basically those values of x, right, which when I substitute in the equation तो LHS RHS बराबर हो जाएगा। अब वो रूट्स अपन काउंट कैसे करते हैं, ठीक है, हाउ डू वी कैलकुलेट द रूट्स, लेट्स कम टू दैट। Suppose we have to find the roots of this equation x square minus 16x plus 60 is equal to 0. So we have to find the roots, right? Find the roots or zeros. So for what value of x will the equation satisfies, right? So one of the approach is a direct formula, right? This we call is a quadratic formula. So in this quadratic formula, if I apply, so what is B? B is basically the general form quadratic equation ka what is ax square plus bx plus c is equals to 0. So on the basis of that, हमारे पास ये formula है. So one of the approach is to apply the formula, right? So we have minus b. So minus 16 plus minus under root, that is b square, which is 16 minus 16 ka square, right, minus 4 times of coefficient of a is 1 nothing and c is 60, right, square root it and will divide it with 2 1, right. That is one of the approach. Now this approach is at times it becomes a bit calculative, you have to solve root and everything, right. So we have another approach that what will we do, we will factorize
right? We will do factorization method. That method uh, is something where I don't have to use the formula, right? We can do that mentally as well. So first, let's understand how is actually that formula works, right? How it works actually. So x square minus 16x plus 60. Now we want to factorize it. So what we do, how we factorize basically, ki I have if ax square plus bx plus c. So I have this method is called the splitting the middle term. Okay, we call this method as split the middle term, the factorization method, or we also call it as split the middle term approach. So what happens in the middle term? We subtract the, we split the middle term in such a way that we will split into two numbers, right? Such that I will get the two numbers should be the product of the two numbers, right? Will give me A into C. I will split B into two parts. Let's say one is alpha, one is beta. So the alpha beta will be such that their product will give me first product of A and C, right? And their sum or difference will give me the middle term, right? So how we will go for that? I have to split 16, right? I want to split 16 in such a way that the product of those two numbers should be what? 60, right? But I'll take the coefficient of A, I will take the coefficient of x square, I'll take the C constant term. Their product is how much? 60. So what I'll do that I have to split 16 into two parts such that their product will give me what? 60, and their sum will give me minus 16, right? Their sum will give me minus 16, right? So how will I do that? So if I have x square, I can write 16 as 10 plus 6, right? 10 plus 6 will give me 16 plus 60. So x square minus 10x minus 6x plus 60, that is equals to 0. That is equals to 0. Now, x I'll take common. So x minus 10 is here. Same minus 6 I'll take common. I'll be left with x minus 10 equals to 0. Again, I'll take x minus 10 common from both. X minus 10, right? And x minus 6 is equals to 0. Right, so that means this equation can be written as this x minus 10 into x minus 6. So by comparing it, we will get x as 10 and we will get x as 6. So I get the two values of x. So just substitute any of the two values and you will find LHS RHS equal. Let's substitute x is equal to 10 in the equation. So 10 square is 100 minus 16 into 10 will be 160 and plus 60. Right, so 160 minus 160 you will get 0. So that's why we are calling them as zeros of the equation, right? So this is the method of splitting the middle term. Now this method can be done a bit fast, right? Let's try to solve without doing so much calculation. So to understand that, I have to first understand how splitting the middle term works, right? So I have to split the middle terms in such a way in two numbers so that I will get the product, right? I will get their product as 60, right? And their sum would be 16 over here. So that's why how I split it. Now how to do that a bit fast? X square I have, minus 16 I have, plus 60 I have. So in this case, the coefficient of x is basically 1. So do not worry about that. Just take 60. Now if I take 60 and split 60 into the two way such that I will get product as 60, and here their sum has to be minus 16, right? Product I want to be positive 60, right? But the sum I want to be minus 16. So if I put minus 10 and minus 6,
Will my condition satisfy? Yes. How? Minus 10 and minus 6 will give me 60, right? And minus 10 plus minus 6 will give me minus 60, right? That can I do manually. So I get that x minus 10 and minus 10 and minus 6. But this is not the correct value. Once you get these values, what I'll do, I'll change the sign, right? If it is negative, change it into positive. So it will become 10 and it will become 6. So directly I will get the values, right? This minus 10 is basically, this is what I am getting, x minus 10, x minus 6, right? But then I have to calculate the value of x, which is 10 and which is 6 over here. I hope it is pretty much clear. So let me just quickly brief it again. That what I have to do, take the number, right? Take basically product A and C. So here I have 1 into 60. So 1 won't be creating any difference. So I take 60. Now break 60 into two parts such that I get the product as positive 60 and their sum as minus 16. Right? So 60 I'll split into two parts, two factors that are 10 and 6. That will give me 60 as well as 16. Now I have to adjust the sign accordingly. Product is positive and sum is negative. So that is only possible if both are negative, right? Let's solve one more question. So this method we'll practice it a little bit. Just let's start. So let's take another problem. 3x square minus 22x plus 40 is equal to 0. Okay, so one way is to apply the formula, right? But we will be doing it directly without applying the formula. So what I'll do, I'll take this 3 and 40, right? 3 into 40. I have to take what we are actually doing. Let me explain it once more. X square plus bx plus c is equal to 0. I want to split b in two parts such that their product should be a into c, right? Product should give me first and the third. 8 a into c, right? So I have taken 3 into 40, that is 120. Okay. Now what I'll do, that I'll try to break 40. I try to split, I to try to find out two numbers, right? Whose product is 120. The product has to be 120 and, right, what I want their sum to be 22, right? I want the sum to be basically minus 22. So first we know ki I have simply we have 40 here. So what we can do, okay, so here I have one number is 10 and one number is 12, right? So 10 and 12 will give me 120 and the sum will give me 22. Okay, no issues with that. Now what I want, that product to be positive, but here I want negative sign. So for that, what I'll do, I'll put a minus sign, right? Because minus 10 into minus 12, minus 10 into minus 12, that will give me 120, and minus 10 plus minus 12 will give me minus 22, right? So both conditions are getting satisfied. But what I told, that I have to change the sign. So if it is negative, it will become positive 10. It will become positive 10. Sorry, positive 12, right? But still, this is not complete, right? Why? Because in the previous case, we do not have the coefficient of x square. That was 1, right? So no issues. But when we have a coefficient of x square other than 1, so what we will do, we have to divide the numbers I am getting by the coefficient of x square, right? So one of the values of x will be 10 by 3 and the second value will be 4. So these are the two roots or zeros of the quadratic equation. Now we have, let's see, another important part it is, if we have an equation like this, ax square plus bx plus c is equals to 0. No issues with this. Now let us say the roots of these equations be alpha and beta, right? Alpha and beta are the roots of this equation.
Now, two things we have. First, we have sum of the roots. We have sum of the roots. And second important thing is we have product of the roots. So there is a direct connection between the roots and the coefficients, right? See, sum of the roots is basically nothing. It is minus b by a, right? Sum of roots is minus b by a. Or let us write it like this, that sum of the root means alpha plus beta, right? Alpha and beta are those values of x, right? Which gives me 0 when I put them in the equation. So alpha plus beta is always equal to minus of b over a, right? This minus will always be there. So coefficient of b, coefficient of x is b and coefficient of x square is a. So sum of the root I can directly calculate by using this approach, minus b by a. Similar way, the product of the roots alpha into beta, it is the constant term by the coefficient of x square. Now, this relation will help you to tackle a lot of problems which are asked in the competitive exams, right? So keep in mind, product sum of the roots is minus b by a, product of the roots is c by a. So we can cross check it. Let's say this was our equation over here. So suppose I have, these are my alpha and beta value, right? Let's calculate alpha and beta from here. So what I'll get, 10 by 3 plus 4, right? So it comes out to be 22 by 3, right? 3 fours are 12, 22 by 3. Let's see minus b by a. But what is the sum of the roots I have? Alpha plus beta is equal to minus 22 over coefficient 3. That comes out to be 22 by 3, right? Similarly, if I take a look at the product, I will get 10 by 3 into 4, which is 40 by 3. From the formula, alpha into beta is 40 c by a, 40 by 3, right? So it is applicable in all cases, right? So this is very, very important. If roots are given to me and I have to find the sum of the roots is given by this, product of the roots is given by this, right? So I hope it is pretty much clear. And we can also derive one thing. Suppose roots are given to us and we have to frame an equation. See, this is the equation here, ax square plus bx plus c. If I divide it both side by a, so what I'll get, b by a plus c by a equals to 0, right? Now I know that this b by a, in place of b by a, can I put minus alpha plus beta? So x square minus alpha plus beta, x is also there, into x plus c by a, can I put alpha beta? Right. So that means if I want to create a quadratic equation, I can do that. How I will be doing that? X square minus sum of roots into the x plus product of the roots is equals to 0. This is how I can frame a quadratic equation from the roots, right? Let us say if it is given to me that the two roots, let's say alpha is equal to 5 and beta is equal to 9, suppose, then I have to, the question will be, how will be the quadratic equation looks like? So my answer will be simple, x square minus 5 plus 9 into x plus 5 into 9 equals to 0. So x square minus 14x plus 45 is equal to 0. So this is how we can frame a quadratic equation by using the roots, right? So this is very, very, very important concept along with the discriminant. Discriminant is also very important, right? So I hope you get an idea how the quadratic, this is a very basic foundation of quadratic equations, right? In the upcoming sessions, we will take it into the more depth. So thanks for watching. So do like and subscribe and share.